Yes, again. A full compact package of all-rounders, very good bowlers and batsmen. Here in the side of Dhruv Parsam. Ram Nagwekar. He does not need any introduction. Again, they've got Sahil Arulkar as well. The young boy, just 20-year-old. Played a thunderstorm 2 days back here to win a big quarter-final match against Ganpati Warriors Uzgaon. It's a very much balanced side here. Dhruv Parsam. And they're up against the challenge posted by Bermuda Point Sheldon. Requesting the 12th man of both the sides to kindly come near the commentary box. They've been absolutely outstanding. The side of Sheldon, Bermuda Point, led by Chandrabhanu, their skipper, as he could be seen walking out to the middle to open today in the big semi-final match. Along with Alvino, who's looked good. Both these batsmen have looked in a wonderful touch. They were outstanding yesterday. Chandrabhanu, the skipper of the side, along with Alvino, the two openers here for the side of Bermuda Point Sheldon. They've been very impressive. Requesting the 12th man of both the sides to kindly report at the commentary box. Alvino will be on strike to face the left arm quick from Dhruv Parsam, Amir. The left arm quick bowler, Amir, will start the bowling attack here at the big semi-finals. The first all go up panchayat and municipality level tennis ball cricket tournament organized by Shiv Maratha Sports and Cultural Club. Starts off with a slow delivery. And smart cricket here from Alvino. You've seen him smash some massive sixes yesterday. And Chandrabhanu is also a wonderful timer of the cricket ball. He's a powerful striker. The skipper of the side, Bermuda Point Sheldon, up against a very smart bowler. That's up in the air but should fall safely. Should just be a single. Good smart bowling here. Amir starting off with the slower deliveries. The left arm quick is bowling left arm off break here. Both the right-handed batsman. It's a very smart move to keep it slow and off cutters. This time a slight fumble and they'll settle down just for a single. That was straight into the hands of the fielder at
Extra cover position. Now that's flicked. And again played with the soft hands. Just for another single. Both the batsmen, it's a steady start for them. They haven't lost a wicket. 4 singles or 4 deliveries. Looking to chip around for quick singles. And again, that's driven through to the cover. And that should be another single. Chandrabhanu back on strike. The skipper off the side. They are being very watchful here. Both the batsmen. And again, another slower delivery. Cut away beautifully. And end of the first over. Just 5 runs off the first over. It's a watchful start here for Bermuda Point Sheldon. Winning the toss, electing to bat first. It's never easy playing across the line. Playing against the turn. A wonderful over here from Amir. That's what they need. Dhruv Parsam. And Sagar, as we can see him, bowling the second over. It was very impressive the other day for Dhruv Parsam. Is up against Alvino now. And another, just a defensive shot there from Alvino. An easy single completed there. Chandrabhanu will be on strike now. I welcome all the spectators on this big Sunday morning. That should just be another single. I would like to welcome all the spectators who just come in to watch this big semi-finals. It's a big Sunday here at Navelim Panchayat Ground. Witnessing Shiva Chhatrapati Chashak. And these are easy singles that they are getting. I really don't think Dhruv Parsam would mind giving away those singles to Bermuda Point Sheldon. The batsman should now shift gears. And another dot ball here. This is great bowling here from Sagar. Keeping it outside off. Not giving easy runs to the batsmen of Bermuda Point Sheldon. Should be just a single. Really very good bowling so far. Sagar and Amir, they haven't given away anything so far. Not even a single boundary. And the batsmen of Bermuda Point Sheldon are just stealing in singles at the moment. This is a semi-final encounter. Now Alvino goes big. And it's a catch. Straight down the throat of the fielder at deep mid-wicket. And a first wicket. The pressure was building. They're just looking to score in singles. One batsman had to take the charge. And a big wicket here. Huge wicket of Alvino. As he departs in the second over.
coming one down. They're on the big match, the high voltage match that is expected between the two sides. Through Parsem and Bermuda Point Sheldon. Wide delivery here for Lakshman to start his bowling. Looked like a very good delivery. A fuller length delivery here from Lakshman. That's cut away in the square region once again, and the point fielder doing no mistake in just keeping it down to a single. Good start here for Lakshman. Chandrabhanu back on strike. Well, he has got the ability to clear the ropes with a lot of ease. That's up in the air and should just be a single. And good to see Chandrabhanu showing some intent now. We're into the third over. Well, this is going to be an 8 overs match. This will be a 8 overs match. The semi-finals will be played of 8 overs each. Now a big shout, but not out, says umpire. Imran was looking to play that switch it, a reverse sweep. Couldn't get any connection. And that should just be another single. Straight to the fielder at long on. The bowling has been really very impressive here from Dhruv Parsem. Lakshman this time bowling the third over for Dhruv Parsem. Oh, that was played beautifully. A wonderful square cut here from Chandrabhanu, the skipper of the side. But straight into the hands of the fielder at point. Just couldn't find the gap he was looking for. Now that's driven along the carpet and should just be a single. And 3 overs gone. 14 for 1. It's been really very tight start here from Dhruv Parsem. They haven't licked away runs. We are yet to see the first boundary from the side of Bermuda Point Sheldon. Really playing with a different strategy today. The overs have been raised to 8 overs. They were very aggressive and attacking yesterday, while they played 5 and 6 overs match yesterday. But today it's a different day. 8 over matches now in the semi-finals. As we can see, the skipper still out there at the middle. Giving importance to his wicket, and rightly so. He's a key man now for Bermuda Point Sheldon. Will have to play a big innings. Will have to stay there till 6 or maybe 7 overs and start converting the loose deliveries into big shots. But there haven't been too many of those loose deliveries so far in this bowling lineup of Dhruv Parsem. Ram Nagwekar into the attack now. Starts off with a short delivery, no timing at all. Well, he should have put that one away. Was a very short delivery this time from Ram to start his bowling spell.
And I certainly feel Chandrabhanu has missed out a big time. Imran will be on strike, facing Ram Nagvekar. And a dot ball. This is good bowling. The right arm quick from Dhruv Parsem. Ram Nagvekar is right on the money. The first was a warm-up delivery maybe. A half-tracker bowled by him. But this time, right in the block hole. That struck. He struck that one powerfully. And that should just be a single again. Again, very good bowling here from Ram Nagvekar. Considering just 2 runs in the 3 deliveries that he has bowled. Now that has taken the outside edge. And they should just settle down for another single. So has been absolutely top-class bowling performance here from Dhruv Parsem so far. We're into the 4th over of the semi-final 1. And they haven't considered a boundary yet. Now that should go and travel along the fans. And the first boundary now over the covers this time. That was a fuller line delivery. So Imran gets the first boundary for his side. Oh, again, that's right inside out. This is beautiful striking. Pure timing once again. A wonderful shot coming out of Imran's bat. Inside out. And over the extra cover fielder this time. Consecutive boundaries. And momentum now shifting in favor of Barbara Point. Really very good batting. 4 overs gone now. And the score is 25 for 1. Turning out to be slightly costly. Couple of boundaries towards the end of the 4th over. And can there be a shift in the momentum now?
First 4 overs gone by. Score is 25 for 1. It's a decent score, I must say. A steady start by the skipper, Chandrabhanu. And it's another dot ball. And Amir has been brought back into the attack. Bowled a very good first over. That struck. He has struck that one powerfully, and it's a 4-6. Well, that's what I was talking about. He was silent, the skipper of the side, Chandrabhanu, and now he has started shifting his gears. Chandrabhanu coming down the track and played it on the front foot. Oh, shot, but that will fall safely. Should at least be a couple. Very good running between the wickets, and that will definitely be referred to the third umpire. The two umpires on the ground, Sir Satgiri Naik and Sir Dinesh Naik. And the third umpire, Sir Vaman Maekar. The 3 match officials. Looks like a very close call here. The decision pending. And out. He's found short off the crease. Very unfortunate here. What a moment here in this game. Chandrabhanu, the skipper of the side, has to take a long walk back. It's a big full toss. And that's taken. Has he taken it or has he stepped down? It's a 6. It's a 6 there, as signalled by the fielder himself. Good honesty shown there by the fielder at long on. And Satyajit gets a lifeline here. Great sportsman spirit. Great sportsman spirit shown there by the fielder. Although it could have been seen on the camera as well. His left foot touching the boundary line of the fans. Beautiful camera work by the two cameramen, Shubham and Omkar, for tenniscricket.in, our YouTube broadcasters. And tenniscricket.in doing a wonderful job here in this tournament. And that should just be another single. So 2 sixes coming in this over. And a good over, I must say, for the side of Bermuda Point Sheldon. And over to Sachin Sawant
for next few overs. थैंक यू डीजे, थैंक यू प्रतीक। फिर से एक बार सभी खिलाड़ी सभी दर्शकों का इस मैदान के भीतर मैं सचिन सावंत दिल से के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बेहतरीन प्रतियोगिता जो कि शिव मराठा स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब हवेलीम गोवा इनकी ओर से शिव छत्रपति चषक 2021 प्रतियोगिता नजर आती हुई। इस प्रतियोगिता का आज का ये अंतिम दिन के ऊपर पता चलेगा कौन सी टीम मुकाबले के ऊपर पहले चषक के ऊपर अपना नाम दर्ज करेगी। फिलहाल तो गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर नए गेंदबाज नजर आते हुए, गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर गेंदबाज जिनका नाम सागर नजर आते हुए। पहले गेंद सत्यजीत के लिए, बड़े स्कोर लगाने का प्रयास, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद डॉट वहां पर नजर आते हुए बड़े स्ट्रोक का प्रयास करते हुए सत्यजीत, लेकिन गेंद और बल्ले का वहां पर सही तरह से संपर्क नहीं कर पाते हुए। आवश्यकता है खुद के ऊपर संयम, विश्वास और धैर्य बनाकर रखने की, क्योंकि 8 ओवर का मुकाबला है। 8 ओवर के मुकाबले में अगर 70-80 रन बना पाते हैं तो मुकाबला आसान रहेगा बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, पिकअप शॉट, गेंद और बल्ले का सही संपर्क, गेंद हवा से बातें करती चली गई सीमा रेखा बाहर छक्के के लिए, और इस छक्के के साथ रन संख्या कुल मिलाकर पहुंची आगे बढ़ी रन संख्या जो कि what DJ? What DJ? Dipesh Gauss chief guest ila. Music machega. At the same time, I would like to welcome Shri Dipesh Kawas, the chief guest for the day, the final day. A big welcome to you, sir, Shri Dipesh Kawas. इस I'd बार like to request you to kindly come up on the stage. Shri Dipesh Kawas, a big welcome to you on behalf of the entire Shiv Maratha Sports and Cultural Club, Navelim, Goa. थैंक यू डीजे। बेहतरीन शुरुआत वहां पर सत्यजीत की ओर से नजर आते हुए, विकेट जरूर बिखरी थी लेकिन उसके बाद पारी को संभाला वहां पर सत्यजीत ने। एक छोर के ऊपर से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सत्यजीत अब तक नजर आते हुए कुल मिलाकर 2 छक्के लगाए हैं, और निजे गोटी की पहले ही गेंद के ऊपर छक्का लगाया था वहां पर सत्यजीत ने। बेहतरीन बल्लेबाजी का दायित्व जो कि टीम की ओर से, बर्मुडा पॉइंट शेल्डेम टीम की ओर से अब तक इस पूरी प्रतियोगिता में जो कि सत्यजीत की ओर से नजर आता हुआ। सागर जो कि गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर सामना करते हुए सत्यजीत और उनके साथ साथ इमरान की जोड़ी मैदान के भीतर। एक छोर के ऊपर सत्यजीत सागर का सामना करेंगे फिर से एक बार। इस बार फिर से एक बार हवा में उड़ाने की कोशिश, गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हुआ नहीं, गेंद चली गई विदुलांदे कारपेट वहां पर खिलाड़ी के हाथों में। काऊ कॉर्नर के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे, हाथों में गेंद चली गई, केवल 1 रन मिला। 1 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई, छोर बदलता हुआ छोर के ऊपर नए बल्लेबाज इमरान नजर आते हुए, और रन संख्या कुल मिलाकर आगे बढ़ती हुई जो कि 48 रन यानी कि 48 रनों के ऊपर। इमरान के लिए गेंद, बड़ा स्लो लगाने का प्रयास, कवर्स के क्षेत्र में गेंद को खेला, वहां पर शायद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे, लॉलीपॉप जैसा कैच वहां पर हाथों में गिरा और पारी समाप्त हुई जो कि बल्लेबाज इमरान की रन संख्या रुकी केवल 48 रनों के ऊपर। कुल मिलाकर 3 विकेटों का नुकसान हुआ वहां पर, और इमरान जो कि आउट होकर बाहर निकलते हुए डीजे।
अतः नए बल्लेबाज मैदान के भीतर नजर आते हुए, जो कि वीरेश नाम के एक छोर के ऊपर सत्यजीत जो कि डटकर बल्लेबाजी करते हुए, दूसरे छोर के ऊपर वीरेश है। आवश्यकता है खुद के ऊपर संयम, भरोसा और आत्मविश्वास बरकरार रखकर बल्लेबाजी करने की। क्रिकेट के खेल में खिलाड़ियों को खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, राशियों के ऊपर नहीं, क्योंकि राशियां तो राम और रावण की भी एक थी, लेकिन नियति ने फल उनको उनके कर्मों के अनुसार दिया। गेंदबाज At the same time, I'd like to welcome Shri Kishore Gavas, another chief guest for the final day, requesting Shri Kalpesh Gavas to kindly escort the chief guest, Shri Kishore Gavas, onto the dais. फिर से एक बार बेहतरीन गेंद उड़ाने की कोशिश, गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हुआ नहीं, गेंद वहां पर चली गई जो कि फाइन लेग क्षेत्र में। खिलाड़ी गेंद के ऊपर आए, गेंद को उठाया, फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक तेजी के साथ भागकर वहां पर बल्लेबाजों ने केवल 2 रन निकाले। 2 रनों के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर नजर आती हुई, जो कि 51 रनों के ऊपर। बेहतरीन बल्लेबाजी का दायित्व देते हुए दोनों ही बल्लेबाज, जो कि वीरेश और उनके साथ साथ सत्यजीत की अगर बात की जाए तो कल का दिन उनके लिए बेहतरीन साबित हुआ था। कल के दिन में सत्यजीत ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन पारी खेली थी, हाथ से निकला हुआ मैच वापस जिता दिया जो कि सत्यजीत ने, और आज फिर से एक बार वही कोशिश। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक नजर आते हुए गेंद और बल्ले के साथ केवल गेंद को दिशा दी वहां पर बल्लेबाज वीरेश ने। देखा वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, हल्के हाथों से गेंद को खेला और केवल एक बेहतरीन स्ट्रोक के बदौलत रन संख्या को आगे बढ़ाया, जो कि कुल मिलाकर 4 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 55 रन कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड के खाते में नजर आते हुए, जो कि 7वां ओवर चलता हुआ प्रगति के ऊपर। गेंदबाजी के बोर्ड के ऊपर लक्ष्मण, जो कि बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए फिर से एक बार स्ट्राइक गेंद के ऊपर वीरेश नाम के बल्लेबाज एक बेहतरीन पारी को अंजाम, जो कि अपनी टीम की ओर से देते हुए बर्मुडा पॉइंट शेल्डेम टीम की ओर से। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मुकाबला जो कि ध्रुव पारसे में बनाम बर्मुडा पॉइंट शेल्डेम के बीच में नजर आता हुआ। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय, जो कि ध्रुव आपके पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया वहां पर, और पहले बल्लेबाजी करते वक्त बेहतरीन पारी। हालांकि कुछ विकेटें बिखरी, लेकिन वीरेश और साथ साथ सत्यजीत की ओर से बेहतरीन पारी को अंजाम नजर आता हुआ। इस बार फिर से एक बार घूमे वहां पर, बेहतरीन स्ट्रोक लगाया, लेकिन दुर्भाग्यवश खिलाड़ी गेंद के नीचे वहां पर आए। जिस जगह पे गेंद गिरनी चाहिए थी उस जगह पे खिलाड़ी नीचे आए। पारी समाप्त हुई वहां पर बल्लेबाज वीरेश की एक बड़ा स्ट्रोक लगाने के चक्कर में वहां पर कॉट दे बैठे और रन संख्या रुकी केवल 55 रनों के ऊपर। डीजे रिक्वेस्टिंग संजीवनी असनोडा एंड रोहित क्रिकेटर्स वास्को कैप्टन्स प्लीज कम फॉर द टॉस. Captain of Sanjeevani Asnoda and Rohit Cricketers Vasco, please come for the toss. नए बल्लेबाज मैदान के भीतर, जो कि 9 स्ट्राइक के ऊपर एशली नजर आते हुए सत्यजीत की साथ देने के लिए। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर लक्ष्मण, इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, गेंद हवा में उठी, खिलाड़ी गेंद के नीचे विकेट कीपर भागकर गेंद तक पहुंचे, तब तक वहां पर कोई रन लेने का मौका नहीं। डॉट गेंद नजर आती हुई, हर एक गेंद के ऊपर अब मात्र बड़े स्ट्रोक का प्रयास नजर आता हुआ, जो कि बल्लेबाज सत्यजीत की ओर से। लेकिन जिस तरह की टाइमिंग की आवश्यकता है इस मैदान के ऊपर, जो टाइमिंग होना चाहिए गेंद और बल्ले का, वो टाइमिंग वहां पर नहीं कर पा रहे जो कि सत्यजीत। यही वजह है लगातार डॉट गेंद लगातार गेंदबाज नजर आता हुआ फेंकता हुआ, जो कि गेंद बल्लेबाज सत्यजीत को। लक्ष्मण फिर से एक बार
इस बार बेहतरीन स्ट्रोक गेंद को उड़ाया, 1 बाउंस 2 बाउंस गेंद वहां पर खिलाड़ी के हाथों में नजर आते हुए एक रन लिया, दूसरे रन का प्रयास वहां पर ढिलाई नजर आते हुए क्षेत्ररक्षण में वहां पर फील्डिंग के क्षेत्र में जो कि ढिलाई नजर आई और उस ढिलाई के रूप में जिस जगह पे केवल एक रन था उस गेंद का रूपांतर जो कि 2 रन में नजर आता हुआ गेंद 2 रनों के साथ साथ रण संख्या आगे बढ़ती हुई रण संख्या की तब्दीली जो कि 57 रनों के ऊपर नजर आते हुए शायद 7 ओवर का खेल जो कि समाप्त होने के बाद लक्ष्मण का एक बेहतरीन ओवर वहां पर नजर आता हुआ प्रतिस्पर्धी टीम के बल्लेबाजों को रोधक लगाते हुए बांध के रखने में सफल रहते हुए गेंदबाज और यही वजह है रण संख्या जो कि 7 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 57 रनों के ऊपर आखिरी ओवर का खेल बाकी जो कि 8वें ओवर का निर्धारित 8 ओवर का मुकाबला 8 ओवर यानी 48 गेंदें वहां पर मिलेंगी अपना खेल दिखाने को। पहली 7 ओवर की समाप्ति होते हुए सत्यजीत एक छोर के ऊपर डटकर बल्लेबाजी कर रहे और दूसरी छोर के ऊपर नए बल्लेबाज जो कि एशली नजर आते हुए ये 2 बल्लेबाज जिनके कंधों के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा, 2-3 बड़े स्ट्रोक इस ओवर में लगाने होंगे, एक महंगा साबित करना होगा यह ओवर, एक बड़े ओवर की तब्दीली यहाँ पर रहनी चाहिए और उसी आशा अपेक्षा में रहेंगे उनके खिलाड़ी जो कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो कि सत्यजीत और उनके साथ साथ एशली के कंधों के ऊपर, क्योंकि यही 2 बल्लेबाज थे जिन 2 बल्लेबाजों ने कल के मुकाबले में बेहतरीन पारियां खेली थी। एशली और सत्यजीत ने अपनी टीम को जीत दिलाने में सफल रहे थे और उसी वजह से आज इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से एक बार नजर आती हुई। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर चंद्रकांत गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर नजर आते हुए निजी कोटे का पहला टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर अंजाम देते हुए गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर गेंदबाज अंपायर की बाई ओर से लगता है गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर पहले गेंद लेकर निजी कोटे की बेहतरीन गेंद लो फुल टॉस गेंद थी, बल्ले के ऊपर आई थी, खिलाड़ी गेंद के नीचे आए, कॉट लपकने का वहां पर अवसर बना, खिलाड़ी वहां पर जो कि विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे, गेंद को लपक लिया, आसानी के साथ कैच मुकम्मल किया, पारी समाप्त हुई जो कि एशली की और रन संख्या रुकी केवल 57 रनों के ऊपर। डीजे इस मैदान के भीतर जो कि प्रज्योत नाम के 9 स्ट्राइक के ऊपर सत्यजीत सामना करेंगे चंद्रकांत का। इस बार बेहतरीन गेंद और बल्ले का सही संपर्क, गेंद वहां पर ट्रैवल करते हुए मिड विकेट क्षेत्र में नजर आते हुए एक रन लेने का प्रयास, दूसरे रन का प्रयास हुआ था लेकिन एक ही रन के ऊपर संतुष्ट रहेंगे जो कि दोनों ही बल्लेबाज। बेहतरीन थ्रो सटीक थ्रो वहां पर निकलता हुआ केवल एक रन के ऊपर संतुष्ट करते हुए अपने दोनों बल्लेबाजों को और रन संख्या रुकती हुई केवल 58 रनों के ऊपर। अगली गेंद वहां पर गेंदबाज चंद्रकांत की अब तक बेहतरीन गेंदबाजी साबित होती हुई अगली गेंद, इस बार फिर से एक बार लो फुल टॉस गेंद को उड़ाया, गेंद नो मैच लैंड में गिरते हुए खिलाड़ी गेंद के नीचे लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी गेंद के ऊपर आए, गेंद को उठाए, फील्ड करे, थ्रो करे, बैकअप करे अपने गेंदबाज के हाथों में, तब तक केवल एक रन मिलता हुआ आखिरी ओवर जो की प्रगति के ऊपर और इक्के दुक्के के ऊपर रन संख्या वहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आते हुए। आवश्यकता है बची हुई 3 गेंदों के ऊपर 1-2 बड़े स्ट्रोक निकले जो कि सत्यजीत के बल्ले से तभी एक बड़ा स्कोर बड़ा टोटल वहां पर खड़ा कर सकें जो कि बर्मुडा पॉइंट शील्ड टीम। इस बार हवा में उड़ाया, गेंद और बल्ले का सही संपर्क लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे, जिस जगह पे गेंद को सीमा रेखा बाहर जाना चाहिए तो वहां पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आए, वहां पर कॉर्ट में तब्दीली कर दी गेंद की और निश्चित रूप से वहां पर पारी समाप्त कर दी जो कि बड़े बल्लेबाज सत्यजीत की पारी समाप्त, रन संख्या रुकी केवल 59 रनों के ऊपर। डीजे Last call, please come for the toss.
Captain of Sanjeevani Osnoda and captain of Rohit Cricketers Vasco, last call. Please come for the toss. थैंक यू डीजे। प्रज्योत जो कि स्ट्राइक के ऊपर गेंदबाज इस बार बेहतरीन गेंद खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का सही संपर्क वहां पर होता नजर आता हुआ, एक रन भागकर तेजी के साथ मुकम्मल, दूसरे रन का प्रयास और एक रन की तब्दीली वहां पर भागकर 2 रन में करते हुए दोनों ही बल्लेबाज नजर आते हुए और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नजर आती हुई और इन 2 रनों के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 61 रनों के ऊपर 8 ओवर 48 गेंदों का मुकाबला। बेहतरीन पारियां अब तक नजर आती हुई, आवश्यकता थी बड़े रन बनाने की, एक छोर के ऊपर सलामी के बल्लेबाजों ने हारागरी की, लेकिन उसके बाद बेहतरीन पारी वहां पर सत्यजीत के बल्ले से जो कि 2 छक्के निकले और उसके बाद अब मात्र प्रज्योत। लो फुल टॉस गेंद, बड़ा स्ट्रोक निकला, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, कॉट होने की संभावना, जिस तरह से कैच वहां पर लपक लिया गया था सत्यजीत का, उसी जगह पर फिर से एक बार गेंद चली गई और पारी हुई समाप्त हुई जो कि प्रज्योत की, साथ साथ इनिंग की समाप्ति होती हुई नजर आती हुई जो कि 8 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या रुकी केवल 61 रनों के ऊपर, यानी कि 62 रनों का लक्ष्य वहां पर नजर आता हुआ जो कि 8 ओवर के मुकाबले में 48 गेंदों के ऊपर। क्या होगा, किस तरह से मुकाबला घटेगा, कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, किस टीम को हार का सामना करना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा। समय के पिटारे में क्या छिपा है किसी को पहले ही पता नहीं चलता, इसलिए तो इंसान हर बार प्रयास करता रहता है। अगर पहले पता होता तो घर पे बैठ के मुंगेर लाल के हसीन सपने देखा करता। डीजे Captain of Sanjeevani and Rohit Cricketers Vasco. शिव मराठा स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब हवेली गोवा यांच्या वतीनं आयोजित एक सुंदर रोमहर्षक स्पर्धा शिव छत्रपती चषक 2021 एक आगळीवेगळी स्पर्धा या मैदानावरती रंग घेते। या स्पर्धेचा आजचा हा अंतिम दिवस। Requesting our guest, honorable guest Dayanand Gavas, to please come to spin the coin of this second semi-final.
टॉस करचो. धनत गावस, दीपेश गावस आणि किशोर गावस. मागलेला असा रोहित क्रिकेटर्स वास्को कॅप्टन लल्ला यादव. संजीवनी असनोडा टॉस जिंकलेले असा आणि डिसिजन त्यांच्यानी फिल्डिंग घेतलेली असा. नामदेव टॉस जिंकून फिल्डिंग घेतलेली असा. ऑल गोवा म्युन्सिपालिटी जो उलटी बाउंड्री हांगा तुमकां नावेली पळोवपाक मेळिल्ली आसा आणि खरेंच एडवांटेज मेळिल्ली आसा बॉलरांक. कित्याक तुमी पळयता की इतले टुर्नामेंट जाता खंयच एडवांटेज आसना पूण म्हाका दिसता मराठा स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब यांच्यानी एक मातशें हांगा बॉलरांकूय एडवांटेज मेळची कशी. थोडी बाउंड्री आता गोंयान आतां आमी इतले टुर्नामेंट खेळ्ळो सगळ्यांक व्हडली बाउंड्री ही आसा आनी स्पेशली आमकां हो ग्रावंड चड बरो गावला खेळोंक आनी आमी आमचो 100% दितले हांगसर. एक क्रुशियल मॅच ही मॅच जिखत जाल्यार तुमी अजून पर्यंत तुमचे पुणाजी फॉर्मान परत येयल्लो आसा तुमच्या खातीर. सो बरे परफॉर्मन्स सेमी फायनलीक पुण्याच्या बॅटांतल्यान बरी अपेक्षा आसतली. हय पुनाजी आमचो की प्लेयर आसा. पुनाजी प्लस रोहन हे दोगूय जाण खेळोंकूच जाय. इम्पॉर्टंट गेम आमकां. हॅलो हॅलो थँक्यू डीजे. 62 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए सलामी की जोड़ी मैदान के भीतर जो कि राम नागवेकर और उनके साथ साथ अमीर की जोड़ी गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर अलविनो नजर आते हुए. अलविनो की अगली गेंद बेहतरीन गेंद वहां पर सटीक टप्पे के साथ डाले हुए खोद कर निकलने का प्रयास. हल्के हाथों से गेंद को खेला. टहलते वहां पर एक रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज केवल एक ही रन के ऊपर संतुष्ट रहेंगे. एक रन के साथ साथ जनसंख्या आगे बढ़ती हुई कुल मिलाकर पहुंचती हुई 3 रनों के ऊपर. अब तक अगर पहले ओवर का खेल देखा जाए तो अब तक 3 सिंगल निकले हैं. 3 रन निकले वहां पर गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर. गेंदबाज अलविनो अब तक बेहतरीन पारी को अंजाम देते हुए बेहतरीन गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर नजर आते हुए. अगली गेंद फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर. इस बार बेहतरीन गेंद बल्लेबाज को चकमा दिया. वहां पर गेंद ने विकेट कीपर के दस्तों में समा गई. डॉट गेंद वहां पर नजर आते हुए सटीक टिप्पे के साथ गेंदबाजी करते हुए अलविनो अब तक नजर आते हुए बांध कर रखने में सफल. इस बार बेहतरीन स्ट्रोक. गेंद को उड़ाया कवर्स की क्षेत्र में. खिलाड़ी गेंद के नीचे कॉट होने की संभावना. आसान सा कैच वहां पर. बेहतरीन रनिंग कैच वहां पर लपकते हुए एक कॉट में तब्दीली वहां पर होती हुई और पारी समाप्त होती हुई जो कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आमिर की वहां पर. आमिर जो कि बड़ी स्ट्रोक लगाने का प्रयास कर रहे थे, खेलना चाहते थे, हवा से बातें करते हुए गेंद जरूर गई थी लेकिन कॉट में तब्दीली हुई और पारी समाप्त आमिर की. डीजे
पारी समाप्त हुई वहां पर आमिर की जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के भीतर जो कि नजर आते हुए राकेश। इन दो बल्लेबाजों के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी 48 गेंदों के ऊपर 62 रन बनाने हैं, चेस करना है। किस तरह से रनों का पीछा करेंगे बल्लेबाज आने वाला समय तय करेगा। समय में क्या होगा, किस तरह से मुकाबले के अंजाम क्या होंगे, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। अंजाम की फिक्र तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात थी दोस्ती निभाने की। इस बार बेहतरीन गेंद हवा में उड़ाया, गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद वहां पर चली गई 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद चली गई सीमा रेखा बाहर। दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद को निकाला, गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के बदौलत कुल मिलाकर रन संख्या आगे बढ़ती हुई 7 रनों के ऊपर लगभग ओवर की हुई समाप्ति, जो कि पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन 62 रनों का पीछा करते हुए डीजे। ढलने नहीं दिया, खुद के ऊपर विश्वास संयम बनाकर बल्लेबाजी करनी होगी। आने वाली गेंदों के ऊपर लक्ष्य का पीछा करना है तो, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं होती दोस्तों, उसे आसान बनाना पड़ता है कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। दूसरी ओवर की शुरुआत नजर आते हुए, दूसरी ओवर की शुरुआत में गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर वीरेश गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर आज बल्लेबाजी में वहां पर नाकाम रहे, कुछ हद तक बड़ी पारी में वहां पर तब्दील नहीं कर पाए थे बल्लेबाजी करते वक्त, लेकिन चाह रहे होंगे कि गेंदबाजी बेहतरीन ढांचे की करे। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर वीरेश, इस बार बेहतरीन गेंद ढीले हाथों से खेला हुआ, स्ट्रोक वहां पर नजर आता हुआ, हल्के हाथों से गेंद को खेला, वहां पर रन लेने का कोई अवसर नहीं, डॉट गेंद नजर आते हुए रन संख्या रुकी केवल 7 रनों के ऊपर, जो कि पहली ओवर की समाप्ति और दूसरी ओवर की पहली गेंद का खेल समाप्त होने के बाद बेहतरीन गेंद वीरेश की हल्के हाथों से खेला, वहां पर बल्लेबाज ने सम्मान बख्श करते हुए गेंद के ऊपर फिर से एक बार गेंदबाज वीरेश गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर नजर आते हुए सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज राकेश, जो कि स्ट्राइक के ऊपर अब तक एक गेंद वहां पर डॉट डालने में सफल रहे थे। गेंदबाज वहां पर एक खिलाड़ी वहां पर शायद तैनात किया है सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी जो कि सत्यजीत नजर आते हुए ऊपर फील्डिंग के क्षेत्र में बदलाव नजर आता हुआ, एक अटैकिंग फील्ड वहां पर सेट किया, क्योंकि टारगेट जो कि छोटा नजर आता हुआ। शॉर्ट गेंद हल्के हाथों से खेला, गेंद को वहां पर खिलाड़ी जब तक पॉइंट के क्षेत्र से गेंद के ऊपर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 1 रन निकला। 1 रन के साथ साथ रन संख्या 8 रनों के ऊपर 8 रन नजर आते स्कोरबोर्ड के खाते में। 1 ओवर और लगभग 2 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ। दूसरी ओवर की पहली गेंद डॉट, उसके बाद 1 रन निकला, 1 रन साथ साथ छोर बदला, छोर के ऊपर अब मात्रा राम नागवेकर ये खिलाड़ी नजर आते हुए हौसले से चुस्त दुरुस्त खिलाड़ी है, एक बेहतरीन उनके पास अनुभव है, अनुभव को जोड़ देनी होगी हुनर की, और हुनर और अनुभव के जोड़ के ऊपर बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगा। इसके बाद फिर से एक बार बेहतरीन गेंद हल्के हाथों से ढीले हाथों के साथ साथ गेंद को खेला, गेंद जब तक शॉर्ट लॉन्ग लेग बाउंड्री के वहां पर आती तब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक केवल 1 रन निकला। 1 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई नजर आती हुई, जो कि कुल मिलाकर पहुंची 9 रनों के ऊपर 62 रनों का पीछा करते हुए। एक बेहतरीन अटैकिंग फील्ड की सजावट नजर आते हुए, खिलाड़ी वहां पर बार बार गेंदबाजी जो कि शॉट करते हुए गेंदबाज नजर आते हुए। इस बार बेहतरीन गेंद गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, शरीर के ऊपर गेंद टकराई, निश्चित रूप से बड़ा शो लगाने का वहां पर प्रयास किया था बल्लेबाज जो कि राकेश ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क वहां पर कर नहीं सके, गेंद उनके शरीर के ऊपर टकराई। डॉट गेंद का खेल नजर आता हुआ, यानी कि रन संख्या इस ओवर में अब तक केवल 2 रन निकलते हुए।
इस बार गेंदबाज बल्ले का सही संपर्क, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कौन होने का संभव, लगभग वहां पर पहुंच चुके थे, आखिरी क्षणों के ऊपर वहां पर कैच छूटा, छूटे हुए कैच की मोहर लगी है निश्चित रूप से, जो कि 3 रनों के ऊपर। राकेश के बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक था, कुछ गेंद खराब थी वहां पर, लेग स्टिक के बाहर गेंद थी, खेलना चाहते थे उस गेंद को लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, लेकिन गेंदबाज बल्ले का सही तरह से वहां पर टाइमिंग कर नहीं पाए। फिलहाल 3 रन तो मिलते हुए, 3 रनों के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर पहुंचते हुए 12 रनों के ऊपर। अब तक बेहतरीन ओवर घट रहा था, केवल 2 रन निकले थे 4 गेंदों के ऊपर, इस गेंद के ऊपर निकले 3 रन, यानी कि बड़े ओवर की तब्दीली में ओवर निकलता हुआ अब तक 5 रन निकले हैं इस ओवर में। और पहले ओवर का हाल अगर देखा जाए तो 7 रन, यानी कि 7 और 5 मिलाकर अब तक 12 रन बनते हुए, जो कि दूसरी ओवर की एक गेंद का खेल बाकी 62 रनों का पीछा करते हुए। इस बार बेहतरीन गेंद जड़ में डाले हुए खुद कर निकालने का प्रयास नहीं हुआ, केवल सम्मान बख्श दिया वहां पर बल्लेबाज राम ने। और इसी के साथ साथ ओवर की समाप्ति हुई, जो कि ओवर नंबर दूसरा खत्म, 12 गेंदों का खेल समाप्त, रन संख्या रुकी केवल 12 रनों के ऊपर 62 रनों का पीछा करते हुए। अभी भी बची हुई गेंदें 36 और 36 गेंदे के ऊपर लगभग 50 रनों की आवश्यकता। क्या होता है इन 36 गेंदों के ऊपर 6 ओवर में, किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं ध्रुव पारसेम क्रिकेटिंग टीम के बल्लेबाज, या फिर गेंदबाजी वहां पर धारदार रहते जो कि बर्मुडा पॉइंट शेल्डन टीम की, है बताने के लिए माइक्रोफोन के ऊपर आमंत्रित करता हूं हमारे साथी समालोचक सम्माननीय तुषार नाइक को, और मैं सचिन सावंत कुछ देर के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद। Thank you, Sachin. A cautious start made here by Dhruv Parsem because they know they are not chasing a big target at the moment. A mere 62 runs to win. So they want their team to provide a steady start, a good partnership here, and then look for the big shots once both the batsmen are looking well set and at the crease. Because you can see this is the very big ground, very big outfield, and ample of gaps in the outfield. You can convert every single into 2 by putting the ball in the gaps, and even 2s into 3s. So no need to take risk of playing big shots here. Let us see what happens as the match progresses. Alvin to bowl the third over. On strike, Rakesh. Short ball, he pulls it. And the pull has been successful. It goes the distance. Another colossal 6 over the deep square leg region. What a welcome to the bowler. Again, you can see the bowler landing the ball in the arc of the batsman, and the ball going out of the park. It goes for a maximum. A swing and a miss this time by Raka. Score moves on to 18. And thank you, Lala Yadav, sponsoring the cricket bat for the best batsman of the tournament. Thank you, Lala Yadav and Rohit Sports. Very well played. This time all along the carpet. Good piece of fielding, but throw not on the target. Thank you once again, Lala Yadav from Shiv Maratha Sports and Cultural Club for sponsoring us a cricket bat for the best batsman of the tournament. Rohit bat, many players use it, that Rohit bat, and scores the runs quickly. This time Ram trying to strike the ball a long way, but not getting good part or getting two end of the bat, but nevertheless gets a single. But they are rotating the strike, they are milking the bowler, and they are putting runs on the scorecard as well. And that is what they need when they are chasing a modest target of 62 runs. You can see a very close infielder at the short cover region. He tries to go for a slog sweep. Plays it towards the long on region. Good piece of fielding, and this time a waiting from Ram. The calling was loud and clear and early as well. They don't want another hiccup. They don't want another fall of wicket here, because this partnership is looking solid and confident enough for the run chase.
What an organization this has been from Shiv Maratha Sports and Cultural Club. You can see the boundary. Very clean and clear for the umpires and for the players as well. This time a flicks on the onside, but a shot mid-wicket in position as well. With this boundary ropes, it makes clear whether the ball has landed inside or over the boundary ropes. And also the sponsors' names have been showcased on the boundary ropes. So every time the ball travels along the boundary ropes, you can see the tournament is being covered live on YouTube. And the boundary hoardings being covered with sponsorship logo, sponsorship tags. So it also makes the sponsors happy with their names being highlighted on the boundary ropes. What an innovative idea this has been from Shiv Maratha Sports and Cultural Club. Red Bull tent has also been erupted here. It has been erected right far from the commentary box end, just at the entrance of this ground. From the parking area, you can see when you enter from the parking area onto the ground, you will see a huge tent of Red Bull being erected. It is the official energy drink sponsor for this Shiv Maratha Sports and Cultural Club's Shiv Chhatrapati Chashak 2021. Three overs, 21 for the loss of 1 wicket, going at 7 runs per over. And in a short while from now, we'll be witnessing the Honorable Chief Minister of Goa giving his presence for this fabulous tournament. A fascinating tournament organized by Shiv Maratha Sports and Cultural Club. And it will be an honor for the spectators and the organizers as well to receive the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. Back to the match, 3 overs, 21, chasing a target of 62, another 41 runs to win. 30 balls, 41 runs. Equation is very simple. Satyajit to bowl the 4th over from the far end. Trying to chase an away going delivery. A warm welcome to Sri Sakaram Gawas, a pronounced businessman and a wonderful human being as well. A warm welcome to him on behalf of Shiv Maratha Sports and Cultural Club for this fascinating tournament of Shiv Chhatrapati Chashak 2021. This time short ball straight to the point field, a fumble and a single being added to the tally score, moves on to 22. You can see Ram, he is a quick learner. He was off the hooks as soon as the batsman timed the ball. Drives the ball towards the cover point region. Another single taken. Ram is batting sensibly. And he is all learning from his experience. He is making every match count. Every match gives you extra experience. And see him, he is batting as cool as a cucumber in this burning heat. Oh, change of pace. But couldn't stop the ball in the follow through. You needed to stop the ball. Another single being added. Score moves on to 24. They are playing according to the field. They are not playing those big shots because they don't require those big shots at the moment, because the run rate is within the reach for the two batsmen out at the center. They are just milking the ball, placing the ball into gaps and picking up those singles.
This time he plays a delicate shot, a deft touch and ball racing towards the boundary ropes. Good piece of fielding, a relayed throw here, and 2 runs added to the tally. Score moves on to 26. 27, correction. 27 with that couple of runs. $35 runs still required for Dhruv Parsem. They have also reached the quarterfinals at CC Dhargal. So consistent performer, the Dhruv Parsem Panchayat team. Sanket Gad celebrating his birthday recently is out here with his lenses to grab every moment of this tournament in his lenses. This time round plays with soft hand and straight to the cover fielder. Trying to jam up goes the finger. What a breakthrough this is. The partnership, which was looking threatening, has been broken down by a smart piece of fielding. Center Sahil, but you don't need that big shots. You just need to give a partnership to Ram Nagwekar. He is batting sensibly at the other end. Good captaincy by the fielding captain as well, placing that short cover in position to stop the single and also in catching position. Low full toss, this time away from the short cover fielder, looking for that second run and will get it comfortably in the end. That is why we say whenever you're looking for the 2 runs in the outfield, the first run has to be taken quickly. $29 runs on the scorecard, end of 4 overs, going almost 7 runs every over, and that is how batting should be displayed here. You can see the difference between the two teams is their calmness, because Dhruv Parsem know what is the target they are chasing, and they have a clear-cut idea of what is the required run rate, and that is why you can see Ram Nagwekar just playing as calm as possible. He knows his stay at the crease will earn his team a spot in the finals. And he's been joined by Sahil, the talented youngster from Dhruv Parsem. He needs to just give support to Ram at the other end. Umesh will be bowling the 5th over. 4 overs, 29. If you look at the comparison after 4 overs, Bermuda Point Sheldon were 25 for 1. And after 4 overs, Dhruv Parsem 29 for 2. So neck to neck. Still 2 fielders very close in. A short cover and now the short mid wicket. A warm welcome to Shri Narayan Gawas, honorable guest of today's function. I welcome him on behalf of Shiv Maratha Sports and Cultural Club
It's a pleasure to have you for this function. Oh, flicked on the onside. Sensible cricket. Just put the ball in the gap. You can see Ram was looking for the single, but as soon as he saw the fielder from the cow corner region coming onto the ball quickly, he changed his idea and was settled with the single. The single score moves on to 20-30. Single of the very first ball of the over. And now a fielder close in for Ram Nagwekar at the short mid-wicket region, because they know that Ram uses his wrist. Big shot attempted this time straight to short mid-wicket. And the non-striker batsman has to be very alert, because already a run out at the non-striker's end has been witnessed by Ram in the previous over. So you need not leave your crease until Ram calls you. Punch member of Navilim Panchayat, Narayan Gawas, has arrived. A warm welcome to him on behalf of Shiv Maratha Sports and Cultural Club. And Ram welcomes the bowler with a colossal, humongous, a massive blow over the cow corner region. What a calculated innings this has been from Ram Nagwekar. The loose delivery has been dispatched, and the good delivery has been picked up for a single. Like a computer now. This time drives the ball towards the long off region. Just a single. Sensible cricket after scoring a big shot. You can see rotating the strike. Gives the strike to his partner, Sahil. "37 runs. Just 25 runs more required." Short ball, he pulls it. And Sahil has to go back. Already one big shot was scored in this over. There was no need of second big shot in this over, because the required run rate was not creeping up. But it was well within the control and
from 18 balls. 18 balls, 24 means 8 runs per over, the required run rate, which is well within the control. "18 balls, 24 runs. Groundsman of SAG staff Prakash Navilkar, Bhim Singh Vantamori, the pitch curator Dharma Mashelkar, Shamsundar Naik, Kusta Gawas have been working all their sweat out here to maintain the ground up to the mark, as you can see on your screen on YouTube via tenniscricket.in. They have been watering the ground. They have been doing all their efforts, rolling the pitch and maintaining this ground. If you count the number of tournaments that has been played in last 4 months, almost 7 to 8 tournaments have been played on this ground. So the groundsmen have been kept busy every day, no break for them. This tournament is being covered live on YouTube via tenniscricket.in. On the main camera you can see Shubham Maskar. The side camera for the third umpires Omkar Sawant. Digital scoring being handled by Prathamesh Parab, and all this under the leadership of Gaurav Sawant. Warm welcome to Pandari Gawas and a belated happy birthday to him as well. Recently celebrated his birthday. And a very strong supporter of Navilim. New bowler Ashley. 18 balls, 24 runs to win, and requesting the people near the gate to just clear the gate, as Honorable CM will be arriving any moment. Mahadev drives the ball over the covers and will just get good running by Ram Nagwekar. Run out opportunity, and third umpire will be in business. What a throw it was, right on the money. Has Mahadev made it, or has it just become too late? Only the time will tell, as the third umpire is checking out on the screen. Score moves on to 40. 22 runs more required from 17 deliveries. Full toss ball. This is poor bowling, as another run has been added to the tally, and the score moves on to 41. Just 21 runs more required from 16 deliveries, as Ram looks to be well settled at the crease and now eyeing the ball like a football. Very soon the drone will be flying in the sky to capture the aerial view of this tournament. You can see Red Bull providing us the official energy drink, which gives wings to fly, and also the drone camera is ready to fly. Played up peacefully over the cover, safest place because no fielder guiding the boundary in that region, and Ram gets a boundary. Just 17 runs more to win now. He's making the chase look comfortable. And the drone takes up its position.
15 balls, 17 runs to win. Ram making this run chase look easy at the moment. A 6 and a boundary. As the camera has entered the field as well. Oh, what a catch! This is Ram has to depart. An away going delivery being chased by Ram. And he is also definitely not happy. I'm just having some words with his new batsman before leaving the field. Two brothers in the lineup for Dhruv Parsem, Rupesh Shivji and Rakesh Shivji. The run chase is very comfortable enough, just a matter of time to be spent at the crease. 14 balls, 17 runs to win. But the fielding team will have certain plans for the new batsman. We can already see an attacking field. A short field on the offside. Straight to backward point. He fumbles and might get a couple of runs now. This is poor cricket from the Blasters Sheldon team. This run had to be stopped and pressure released. Just 15 runs required now from 13 deliveries. As Rupesh gets off the mark with couple of runs. Another change of pace delivery and a single taken. Certainly fielding lapses have cost them. 12 balls, 12 runs to win now. Twelve balls, 13 runs to win. Hello. You can see the organizers all set to welcome the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, as he will be arriving in a few moments from now. And the run chase is looking simple now for Dhruv Parsem. 12 balls, 13 runs to win as drinks being taken by both the batsmen. You can see the drone getting the aerial view very close to the ground level. Twelve balls, 13 runs to win. Also the fielding team quenching their thirst. You can see Red Bull, a huge tent being erected, as well as a nice umbrella just giving the shade for the spectators. Viresh to bowl the 7th over of the innings. As Mahadev will be on strike to face Viresh.
12 balls, 13 runs to win. Equation is as simple as you get. Bowling from the commentary box end. Oh, swing and a miss, a dot ball. Even the dot balls at this stage won't create any panic in the batting lineup because the run rate required is well in control. Just 6 runs per over. 11 balls, 13 runs to win. As one more fielder comes inside the 30-yard circle, trying to add more pressure on the batsman. In fact, he is being kept halfway from the boundary ropes. This time, swing and a miss again by the batsman. Another dot ball as Rupesh just leaves the crease to have a chat with his partner. 10 balls, 13 runs. If the bowler is able to finish this over well, then Dhruv Parsem might chase around 8 to 9 runs in the final over. Still 4 more deliveries remaining in this over as there is a short cover and a short mid wicket right in front of the eyes of the batsman. Oh, swing and a miss, loud appeal. But the umpire is not at all interested in the appeal. Another dot ball. 3 dot balls, just creating a slight panic in the batting lineup. Mahadev playing 3 dot balls in a row in the penultimate over. Now the equation just becoming critical. 9 balls, 13 runs. What an over this is turning out to be from the bowler, Viresh. Played up easily towards the long off, looking for the second and throw right on the money. What a piece of fielding this has been from the Bermuda Point Sheldon. 12 runs, 8 deliveries to go. 8 balls, 12 runs. Rupesh on strike. What will be going through the mind of the batsman? Because just 1 run have been scored in this over. But he needs to bat sensibly. Ample of vacant spaces on the ground. You can convert them into 3 runs if you put the ball in the perfect gap rather than playing those big shots. All out of peel. Another dot ball. 4 dot balls from first 5 deliveries. 7 balls, 12 runs. What an over this is bowled by Viresh. Just 1 run conceded from his 5 deliveries. Fantastic piece of bowling. Change of pace delivery. The cow corner fielder fumbles and 2 runs added. So 10 runs required from the final over. The match has turned on its head. 6 balls, 10 runs to win. What a game of cricket this is turning out to be. What a magnificent comeback. The game is not over yet. Fasten your seatbelts. It's been a magnificent comeback here from the side of Bermuda Point Sheldon. Like how the Bermuda Triangle has been a mystery so far, this match has also turned out to be a mystery as Pandari Gavas is all set to take the stage. A warm welcome to Pandari Gavas on behalf of Shiv Maratha Sports and Cultural Club, a strong supporter of Navelim cricket team.
Yes, thank you, DJ. That is why we say a low scoring match is also interesting. You must have witnessed the finals yesterday of Shri Manohar Parrikar Trophy. Defending just 116 runs, Mandavi Parivar in the end took the match till the 19th over. But what a knock it was from the captain Darshan Misal, securing their team across the winning line, playing a captain's knock. Good bowling display by Sher Bahadur Yadav, trying to take the match as far as possible in the run chase. 10 runs to win from the final over for Dhruv Parsem. It will be Mahadev on strike, Ashley to bowl the final over. Mahadev will have to self-believe in himself and take the team across the winning line. Full toss, driven into the gap. Just a single. They don't want to run out at this stage as Rupesh comes at the striking end. 9 required from 5. They need a boundary in this over to get the control of this match. Let us see what will be going through the mind of the fielding captain. Which area will he be trying to secure with the fielders on the boundary ropes? Fielding position will also count because this is a very big ground. Whether you need players right on the boundary ropes or they should come ahead a few distance will be a big challenge for the captain. Change of pace delivery, another dot ball. Now 4 balls, 9 runs to win. What a match this is turning out to be. It's a cat and mouse game. The pendulum being shifting right from one end to the other. It is even Stevens. It is 50-50 at the moment. One big shot, Dhruv Parsem right back into the match. But what a fight back this has been from Bermuda. Flicked on the onside, into the gap, racing towards the boundary. And what a piece of fielding this is. Looking for the third. And comfortable 3 runs added to the tally. 6 required from 3. What a commitment in the fielding department. Diving on the outfield, and only this Navelim ground made it possible for the fielder to dive. Otherwise, on any other ground, the skin would have been peeled off. 3 balls, 6 runs to win. Ladies and gentlemen, fasten your seatbelt as the game going to another cliffhanger, as both the batsmen take a deep breath before the next delivery has been bowled. Yes, Tushar, what a game this is turning out to be. An absolute thriller. We are moving towards a fascinating end. 3 balls remaining and 6 to get. Dhruv Parsem still well in this, but you've got to give a lot of credit to the fielding side as well. Out of nowhere, 13 needed of 12 deliveries. And what a fight back this is turning out to be. Great game of cricket. Mahadev on the crease, on the striking end. Quick delivery this time, dot ball. What a ball under pressure. He has bowled an absolute ripper here. The ball was whistling past the outside edge of the batsman. Lucky not to get a nick here. Now 2 balls, 6 runs to win. The batsman has to look for a ferocious stroke here. You cannot wait for the last moment. You need to be a hero for your team. 2 balls, 6 runs to win. What a match on the hands. Good strike, but the longer fielder. Oh, fumble, but good backing up. 2 runs added. Now boundary required from the final delivery. Boundary of the final ball. What a match. What an absolute thriller this has been. No nails left on the fingers to bite anymore.
If you look at the field position, there is a long on, there is a long off, there is a deep mid wicket as Rupesh will be on strike. Both the batsmen taking their time. It is not easy to run at this stage because it's 12:15 on the clock and the sun is right up in the sky. As you can see the shadow right beneath you. What a match, what a cracker of a match for the spectators joining us on YouTube. One ball, boundary. A warm welcome to Tushar Cholera for this final ball of these semi-finals. Full toss! And it has been taken! What a match this is! Out from nowhere, back into the match. It is Bermuda Point Blasters who have made it into the semi-finals by shocking Dhruv Parsem. Even the supporters of Dhruv Parsem cannot believe it. They were chasing mere 62 runs to win in 36 deliveries. In fact, 48 deliveries. And what a match, what a match. The two batsmen played a lot of dot deliveries in the last 2 overs and that led to their downfall. What an over it was bowled by Viresh, and the fall of Ram Nagwekar's wicket turned out to be the turning point of the match. Yes, Tushar, what a game of cricket we witnessed out here at the Navwell Panchayat ground. What a game of cricket. 13 needed of 12 deliveries. And Bermuda Point Sheldon still believed that they could sustain the match. And the certain belief and confidence letting them through to the finals of the big tournament organized by Shivarata Sports and Cultural Club. I would like to thank Dhruv Parsem team for being a part of this tournament, and they have played fascinating cricket. Man of the match, to give away the man of the match, I request Shri Sakaram Gawas